અને હવે વાત કરીએ નીતિન પટેલની। नाम में क्या रखा है? आम तो आ बात साची है, परंतु अहीं बात है भाजपना कद्दावर नेताना नामनी, जेमना गायब थयेला नामे फरी एकवार सर्जी है अनेक शंकाओ। फरी सर्जायो विवाद, फरी गायब थयुं नाम कद्दावर नेतानुं वेतरायुं कद। फरी एकवार उठ्यो छे विवाद नितिन पटेलना नामनो, कारण के फरी एकवार कपायुं छे नितिन पटेलनुं नाम। मेट्रो ट्रेनना लोकार्पण कार्यक्रमनी पत्रिकामांथी नायब मुख्यप्रधान नितिन पटेलनुं नाम गायब थई गयुं छे। जुओ आ पत्रिका, जेमां पीएम सीएमना नाम बाद अमदावादना मेयर बिजल पटेलनुं नाम छे। अमदावादना पूर्वना सांसद परेश रावलनुं पण नाम छे, परंतु सीएम रूपाणी बाद जेमनुं स्थान आवे तेवा नितिन पटेलनुं नाम गुम छे। आगाऊ अमदावादमां सरदार पटेल होस्पिટલના लोकार्पण कार्यक्रमની પત્રિકામાંથી પણ नितिन पटेलનું નામ કપાઈ ગયું હતું। ત્યારે નાયબ મુખ્યપ્રધાન नितिन પટેલનું રાજકીય કદ વેતરાયા હોવાની શંકા કુશંકાઓએ ફરી એકવાર જોર પકડ્યું છે। આખરે કયા કારણોસર ભાજપ પોતાના આ દિગ્ગજ અનુભવી અને કદ્દાવર નેતાની અવગણના કરી રહ્યું છે તેવા સવાલો પણ હાલ ચર્ચામાં છે। वारंवार नाम कपावा पाछळ मुख्यमंत्री और नायब मुख्यमंत्री वच्चेनो खटराक पण कारणभूत होवानी ज अटकळोए वेग पकड्यो छे। ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज 18 गुजराती। અને હવે વાત કરીએ દબંગના દમની। बाहुबली नेतानी छाप धरावता मधु श्रीवास्तवे कर्यो छे पाकिस्तानने ललकार, અને આ લલકાર સાથે દબંગ નેતા આવ્યા છે ચર્ચામાં। દબંગ નેતાનો દમ, પાકિસ્તાનને મધુ શ્રીવાસ્તવની ચેતવણી। પોતાના આખા બોલા સ્વભાવ માટે જાણીતા મધુ શ્રીવાસ્તવે છેડ્યો છે રાષ્ટ્ર રાગ। આતંકવાદ સામે ધારાસભ્ય મધુ શ્રીવાસ્તવે નિવેદન આપ્યું છે કે સરકાર મંજૂરી આપે તો આત્મઘાતી બનવાની તેમની તૈયારી છે। देश माटे प्राणोनी आहुति आपी आतंकवादीओनो खात्मा करवा माटे पण तेओ तैयार छे। जे हुमलाओ हमारा हिंदुस्तान पर करता आया छे आ लोको एमने खरेखर एमने मजो चखावा जरूरी छे ने मजो चखावा माटे हमारी सरकार अमने रजा आपे, हमारी सरकार अमने जो शस्त्र आपे, हमारी सरकार अमने कहे तो हमें हमारा कार्यकर्ताओं आत्मघाती बनवानी हमारी तैयारी है। जाननी प्राण आपवानी आहुति हमारी तैयारी है। देश ने हिंदुस्तान माटे बलिदान थवा हमारी तैयारी है। आतंकवादीओए जे रीते भारतना वीरो पर हुमलो कर्यो त्यारे समग्र देशमां गुस्सो छे। आ गुस्सामां बाहुबली नेताए पण पोतानो साथ पुराव्यो छे અને पाकिस्तान पर आक्रमण करवानी तैयारी पण बतावी छे। फरीद खान, न्यूज 18 गुजराती, वडोदरा। पुलवामा आतंकी हुमला और एयर स्ट्राइक बाद देशभर में देशप्रेमनी लहर छवाई है। ठेर ठेर जवानों शौर्य ने बिरदावाई रह्यु छे, शहीदों ने श्रद्धांजलि अपाई रही है। त्यारे सुरती लालाओ पण रंगाया है शौर्यना रंग में। भारत पाकिस्तान वच्चे चाली रहेला तणावने लई देशवासीओ हाल देशभक्तिना रंगे रंगाया छे। त्यारे सुरती लालाओ क्यां पाछळ रहे? शिवरात्रिना पावन पर्व पर सूरतमां शिवभक्तिनी साथे जोवा मळ्यो देशप्रेम। सूरतना शिव मंदिरोमां आ शिवरात्रिमां शिवजीने घीना कमळ साथे शहीदोने श्रद्धांजलि आपता कमळो पण जोवा मळशे। शहीद चौक तेना पर बंदूक और सैनिकनी टोपीवाळा कमळना पेन्टिंगनी साथेना कमळ तैयार थई रह्या छे। अमे छे ने तो आ देशभक्ति माटे ज आ बनाव्युं छे जवान शहीद जवाननुं ने अमे घीना कमळनी उपर ज बनाव्युं छे ने अमारा बधा जे घरना व्यक्तिए के आपणे आ पिक्चर श्रद्धांजलि आपी छे तो घीना कमळथी ज श्रद्धांजलि आपी छे। अमे सैनिकोने श्रद्धांजलि आपवा माटे घीना कमळ साथे महादेवजीने ड्रॉ कर्या छे। तो महादेवजी साथे जे लोको जोवा आवे छे के घीना कमर आवेला छे बनावेला छे तो महादेवजी साथे सैनिकोने पण श्रद्धांजलि मळे अने लोको एमने पण याद करीने स्वर्गमां जग्या आपे।
તો પાકિસ્તાનમાં જઈ પોતાના સાહસ અને શૌર્યનો પરચો બતાવી આવનાર વિંગ કમાન્ડર અભિનંદનની વીરતા પર પણ સુરતી લાલાઓ ન્યોછાવર થયા છે। સુરતમાં સાડીના પ્રિન્ટ માસ્ટરે અભિનંદન અને ભારતના વીર જવાનોની વીરતા દર્શાવતી સાડી તૈયાર કરી છે। મિગ વિમાન, કાશ્મીરની ઘાટીઓ, મિસાઇલ્સ, મોર્ટાર શેલ્સ વગેરેની પ્રિન્ટવાળી આ સાડી પણ આકર્ષણનું કેન્દ્ર બની છે। सर्जिकल स्ट्राइक के बाद हमको लगा वो जो साड़ी बनाई हमको अच्छा ऐसा मार्केट में रिस्पांस मिला है, व्यापारी ने अच्छा उसको पसंद किया है। वो हिसाब से हमको लगा जो कल उत्साह हमने देखा अभिनंदन के बारे में और जो आज पूरे देश में उत्साह का वातावरण है और हर एक आदमी पे प्रत्यय यही होता है कि हम भी ये कर सकते हैं, वो हिसाब से हमने अभिनंदन के का एक पिक्चर लॉन्च किया। पूरे भारतवर्ष को इस टाइप का था कि भाई यार इसका एक बहुत बड़ी बहादुरी की वाली बात है हिंदुस्तान के लिए, और वो आया उसके लिए देखरेख केंद्र में हमने ये साड़ी लॉन्च की अभिनंदन के लिए। और इसके अंदर पूरी साड़ी के अंदर बताया गया किस तरह से मिराज ने हमला किया था, किस तरह से टैंक अपने लगे हुए थे, किस तरह सिपाही का अपने लोगों का था। समग्र देश हाल बहादुर जवानों शौर्य गाथा गाई रह्यो छे। देशवासीओ देशना वीरलाओनी પડખે ઉભા છે, ત્યારે સુરતી લાલાઓ પણ દેશ પ્રેમમાં ડૂબી ગયા છે। કીર્તિશ, ન્યૂઝ 18 ગુજરાતી, સુરત। અને હવે વાત કરીએ વાઘના બચ્ચાની। મહીસાગરમાં એક વાઘના મોત બાદ અન્ય બાળ વાઘના પંજાના નિશાન મળી આવ્યા છે। સ્થાનિક વન વિભાગ આ માહિતી બાદ હરકતમાં આવ્યું છે અને તપાસ હાથ ધરી છે। જોઈએ આ અહેવાલમાં। રાજ્યમાં વાઘની પાપા પગલી, ફરી મળ્યા વાઘના પગલા, વન વિભાગ આવ્યું હરકતમાં। ગામમાં વાઘ છે તેવી આશ થોડા દિવસ પહેલા જાગી હતી, પરંતુ મહીસાગર જિલ્લામાંથી એક વાઘનો મૃતદેહ મળી આવતા આ આશ રાખમાં રોડાઈ ગઈ। હવે આ આશ ફરી જાગી છે। કંતાર પાસેના જંગલના મુખ્ય રસ્તા પર આવતા ખેતરમાં બાળ વાઘના પગલા મળી આવ્યા છે। જો કે આ અંગે વન વિભાગના કર્મચારીઓએ કોઈ મજબૂત પુરાવા ન મળે ત્યાં સુધી કંઈ પણ કહેવાનો ઇનકાર કર્યો છે।